So as per the syllabus, I have seen that in your syllabus, most of the things are object-oriented Java concept, and Okay. they are algorithm based. Algorithm based means Okay. different algorithm that we will going to use to solve the problems. Like we have seen in the lead code to some problem, right? Yes. That was actually the algorithm to solve that to some problem. So we're going to see Okay. the algorithm for searching, sorting, shortest path algorithm. This is actually comes under OOPS concept as well as algorithm design. Okay. One subjects are there in engineering. So in that we have algorithm design subjects. What is an algorithm? How you can find out the complexity. Complexity in the term means how much space and memory it requires. Okay, so there are two terms are there. First is your space complexity, and second is your time complexity. Time. Okay. So in So why space, it comes under data structures? So you are saying it comes under OOPS only. it's not comes under OOPS, it comes under algorithm design. But in order to implement that, you have to use the concept of Java programming. And because Okay. as the Java is based on object-oriented programming, so that's why we implement that. But it's not like uh, but with respect to Java, I'm saying. But if you see about Python, in Python also we have a space and time complexity. But Yes. uh, Python is not, you can say, complete object oriented. I mean, like Smalltalk is only language which is completely object oriented. But Java, without using OOPS, also you can create a program, right? You can just create a class, you can create a main method, and even if you do not create object, you can run it. But Smalltalk Yes. is something program where you have to create an object. Without that, you can't run that. So that's why I've said in that context. So space complexity will going to calculate your space. Space in the sense memory acquired by program. Okay. Not only this memory, means memory by program only, but with the input also means how much input you are passing that user input on which your code will work. So space Okay. complexity means the memory that is acquired by your program inside your RAM. Memory, whenever we say term memory, it means it is with respect to RAM. And when we say storage, it means your hard disk. So always remember, Okay. like even in operating system subject or in computer science subject, whenever they anyone say memory it means your RAM, which is Okay. your temporary memory. And Yes. whenever they say storage, it means your hard disk, Yes. permanent storage. So in my class, they were sharing some terms such as JUnit, Yeah, and they were okay. also sharing some or other terms also. So we haven't done that terms. Actually, that is Ye- testing side. JUnit and all comes Yes. under testing Yes. of the code. That was not in that syllabus last time, so I haven't discussed that. JUnit is Okay. used. There is a separate like a role in any company, developer and Okay. tester. So automation you might have heard or might have seen in any website QA automation or QA side, quality analyst. We say quality Okay. analyst means testing side, whose work is to Okay. just test the code. For example, if I say you, like you have written the sum function. Okay, you have Yes. written sum function, and to that sum function, you are passing two parameter, integer A and integer B. Okay. Okay, and you have written the logic that will going to accept integer value, and they will going to do some means some addition and print the value, and then that code will you are going to pass the testing team. Testing team will check for every possible test cases. What is the test cases here? टेस्ट केसेस मीन्स यहाँ पे जो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? अगर मैं ए की वैल्यू Hmm. 1 2 दे रहा हूँ तो ये सम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं,
कुछ इनपुट Okay. ऐसे होते हैं यहाँ पे, जैसे इंटीजर है, इन केस आपने Hmm. यहाँ पे पास कर दिया वन और ए, वन और ए, सो उस केस में वो Hmm. फेल हो जाएगा। तो ये Yes. जो क्वालिटी एनालिस्ट का जो वर्क होता है, जो क्वालिटी एनालिस्ट मीन्स एक्चुअली टेस्टर साइड होते हैं, उनको मीन्स they they have a little bit knowledge about the coding, but they use some फ्रेमवर्क, जैसे कि ये यूनिट आपने कहा। सिमिलरली पाइथन में पाई टेस्ट होता है, यूनिट टेस्टिंग होती है, मतलब यूनिट वाइज हम चेक करते हैं, मॉड्यूल वाइज। सम फंक्शन चेक कर Okay. लिया, फिर मैंने माइनस फंक्शन, देन सब्ट्रैक्शन, देन एडिशन और लाइक डिवीजन। so module wise we Hmm. will going to test it, so that so in java, with the help of code you do it with JUnit, और but nowadays company are using tool, selenium करके एक tools होता है। उस tools मतलब actually it is a software, you just upload the code and just tell them that these are the possible test cases you feel, so based on that वो Okay. automatically find out कर लेते हैं कि मतलब किस केस में ये फंक्शन फेल हो जाएगा। so in that case you can tell the developer that Hmm. here we need to make a changes, we need to make sure that this will be integer only, so like that Okay. test cases are used. Okay. And time complexity means what, how much time your code need, your code, or it is the same thing, means how much time your code need to process the data. Okay, how much time your Yes. code need to process the data. So now here uh, जो ये कंप्यूटिंग होता है, मतलब कंप्यूटिंग मतलब टाइमिंग, प्रोसेसिंग टाइम, इट्स वेरी like it's very matter, means you can say like it's like a matter of discussion, because जितना कम computing time होगा, more will the code will be efficient. You only think like if you run the code on Eclipse and it is Yes. taking almost 1 hour, 2 hours, then that is not efficient, right? In that case, your Yes. software performance will be low when it will come to the market. So this computing time should be fast. That's why people nowadays are using framework or latest database, cloud technology, so that they can reduce the response time of your code. Once you give the input, the response time should be less. Okay. So computing time मतलब होता है time complexity means how much time your code requires. So this is being in term of a algorithm. And what is OOPS here? OOPS will help us to implement this algorithm, and in the data structures we're going to see the list, tag, queue, just like collection framework we have seen in the Java course, right? So this is Yes. the way. So always remember, like JUnit is nothing, just a framework. JUnit is a framework. And there was one more word also, assertion, I think. Okay, assertion, yeah. Assertion is used for quality check So, only, just like try okay. exception block. So assertion एक So term होता these है, all come under testing only. yeah, they all are comes under testing. Assertion मतलब Yes. आप टेस्ट केसेस पास करके क्वालिटी चेक कर रहे हो कोड का, हाउ मच कोड इज तो एफिशिएंट। तो तो उन्होंने तीन चार बताया था, जे यूनिट, assertion और डिबगिंग था। डिबगिंग तो पता ही है। और एक यस, में एक और भी था कुछ, वो भी उसमें इलिप्स में जाके होता है वो, ऐसे कुछ। क्वालिटी चेकिंग कहते हैं इस स्टेप को। क्यूए करके होते हैं टीम्स, डेवलपमेंट हम्म। टीम होती है, क्यूए टीम होती है, तो उनका वर्क होता है कि वो कोड को क्वालिटी चेक कर सके। तो उसके लिए आइदर दे यूज ओके। टूल्स, nowadays they are using tools only, most of them, but like the हम्म। small company they are using framework, because earlier ओके। days tool nahi the. So but now ओके। they are using this framework because sorry, the tools they are using it because it is fast, and you have a lot of code, means inside the package you have a multiple file, so it's difficult to यस। check every module manually passing the test case. हम लोग मैनुअल टेस्टिंग भी करते हैं मोस्टली डेटाबेस में। डेटाबेस हम्म। में आप वैल्यू को इंसर्ट करके देखते जाते हो
key value, whether that column is accepting the value or not. Have you done work on database, any database? Not yet. Okay, SQL query पता है कैसे लिखते हैं? SQL. अच्छा ठीक है, ओके लेट इट बी। डेटाबेस होता है एक बैकएंड साइड में जहाँ पे हम डेटा को सेव करते हैं, तो उसके लिए क्वेरी Yes. लिखना होता है। क्वेरी मतलब जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग वे ऑफ सेविंग Hmm. द डेटा, मतलब हम नॉर्मली आप डेटा को ऐसे ही उठा के सेव नहीं कर सकते। उसके लिए जस्ट लाइक Hmm. जावा प्रोग्राम लिखते हैं ना, वैसे ही एक क्वेरी लिखनी होती है, एसक्यूएल क्वेरी बोलते हैं उसको। Hmm. सो सिमिलरली क्यूए भी मीन्स लॉट ऑफ फाइल्स आर देयर, सो सेलेनियम में हम कोड को अपलोड कर देते हैं। सेलेनियम एक टूल है, यू कैन एक्सप्लोर मोर फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। सेलेनियम टूल होता है, इस टूल पे आप कोड को अपलोड कर देते हैं, वो आपको पॉसिबल टेस्ट केसेस बता देता है, तो आपका टाइम बच जाता है। Okay. क्योंकि सो दिस इज अ वे ऑफ एल्गोरिदम एंड like testing JUnits and all. So JUnit is a framework, just like AWT फ्रंट एंड के लिए होता है, Swing होता है एक फ्रेमवर्क, राइट? कलेक्शन Hmm. एक फ्रेमवर्क है, वैसे JUnit एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी बोल सकते हो, that is helpful in testing your quality of the code. Okay, Okay. so you can note down these points, seleniums and all, or you can watch this video also, so that you will come to know this keyword, so you can explore from your side. Okay. Okay. So it's a uh, chemical element. it's the name of the tool they are given, like selenium. Correct. There is It some shows more. on Google, so that's why I told you. Oh, no, you just type it like selenium tool, testing tool, Okay. so it will come. Yes. Let's see, selenium testing interview. Selenium testing tool is an open source automated testing framework used to validate web application. So एक ये ऐसे selenium tools होता है, you need to Okay. framework है web application, or many code you can test it, not only for Java but multiple programming you can use it. Okay. So that was a general idea about the algorithm. Let's start about so actually my algorithm क्या है, data structure, algorithm analysis, we'll all going to see that. And obviously whatever in your syllabus like queue list, linked list, sorting algorithm, Hmm. searching algorithm, this is all a combination of an algorithm designing and data structure. Because in the interview, they will not going to ask you only the data structure. They will give you any problem domain which are based on algorithm, and you have to implement with a data structure. तो जैसा कि Okay. अगर सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम Hmm. को आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व कर सकते हो? अरे का यूज कर सकते हो, राइट? सो Hmm. एल्गोरिदम डिजाइनिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर nowadays, like in engineering, they are just adding only one subject with both the content of algorithm designing subjects and data structure. So ठीक है. with the use of data structure आप एल्गोरिदम को सॉल्व कर सकते हो। एल्गोरिदम हो गया सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो गया, राइट? जैसा कि Hmm. कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमने देखा है, so like that it will works. So this is the now the actual thing we will start. What is an algorithm? First of all, we need to understand what is an algorithm. Algorithm is actually the procedure, you can say, or step by step or step to solve any problem domain in a mathematical term. So mathematical term बोलने का मतलब ये है कि एल्गोरिदम, अगर मैंने जैसे आपको कोई प्रॉब्लम दी है, like problem in the Hmm. sense if I given you any case study or any problem domain, just like you have to find out the index of two number whose sum is equal to target number, just like two sum problem. तो आपने वहाँ पे एक सेट ऑफ कोड Okay. लिखा है, राइट, फॉर लूप्स एंड ऑल। सो Hmm. एल्गोरिदम, ठीक है. एल्गोरिदम इज सेम थिंग। Program Hmm. in term of programming language you are implementing, algorithm is a theoretical terms, means algorithm बोलने का मतलब हो गया कि आपने एक step लिखा है, that you have written the procedure that how you can solve that problem. So like if they ask you, there are three
Actually, different criteria, you can say category, program, pseudocode, algorithm. एक सूडो कोड होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिखते हैं, लाइक कि हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। हम्म। एक हाई लेवल, और ये हो गया प्रोग्राम हो गया जो कि जावा, पाइथन, सी लैंग्वेज आप इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक एल्गोरिदम होता है जो कि आप just in the form of flow chart or box you represent it, like what is an algorithm, like how it is solving, just like searching algorithm है। तो एक सर्चिंग का हम्म। एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एक एल्गोरिदम है। तो ये एक एल्गोरिदम हो गया, मतलब एक प्रोसीजर है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। एंड देयर इज अ मैथमेटिकल काउंटर पार्ट इन दिस, how the mathematical involves in solving the algorithm. If you see searching algorithm, binary search पता है? हम्म। सो बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है, राइट? उसमें भी मैथमेटिकल टर्म होता है। इफ यू रिमेम्बर आई यस। एक्सप्लेन द कोड कि उसमें मिड, माइनस, एंड, और यस। वो हम लोग फाइंड करते हैं, राइट? तो मैथमेटिकल लाइक concept we need to use it, not concept, I will say, like in order to solve the algorithm you are required to use mathematical expression or mathematics in solving that. So that is called an algorithm. And ओके। there, while solving the algorithm, you will need the complexity, time complexity and space complexity, to analyze ओके। how your code is efficient. Because in the ओके। company, three people there implement the code. So always what happens, some managers or like other people, they just compare the code, whose code are more efficient in term of computing, space and all, and then finally the code is implemented. ठीक Because है। when three different people they implement a code, उनका लॉजिक अलग होगा। हो सकता है कि हम्म। कोई कलेक्शन फ्रेमवर्क से कर रहा हो सकता है कोई हम्म। दूसरे टेक्निक से कर रहा हो। तो कौन से कोड मोर इफिशिएंट है, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं और उस कोड को अप्रूव करते हैं। बट समटाइम ठीक ऐसा है। होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इफिशिएंट है, बट दैट कोड वोंट लाइक सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग। ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि लाइक सपोज अगर मैं एक कोड बनाता हूँ जो कि जिसमें मैंने सिर्फ एक फॉर लूप यूज किया है, एंड इट इज हम्म। efficient as of now, but in future if the data increase or the requirement increase, then suppose static array है, static array में मैंने suppose even if I give 1 lakh size, तो static array कभी ना कभी जाके फेल होगा, राइट? क्योंकि वो साइज कभी ना कभी जाके फेल्ड होगी। तो एज ऑफ नाउ ओके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफिशिएंट है, बट इज इट हम्म। सर्वाइव फॉर लॉन्ग? नो। डायनेमिक अरे लूंगा अगर मैं, तो उसमें स्पेस हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होगी, बट इट इज लाइक मोर ट्रस्टवर्दी, इट वोंट बी गेटिंग फेल इन फ्यूचर। तो ये दो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है? और ये 5 कीवर्ड होते हैं, लाइक whenever you solve any algorithm, these 5 keyword is responsible for that: finiteness, definiteness, इनपुट, आउटपुट और इफेक्टिवनेस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम डोमेन दिया जाता है, तो आपको ये 5 चीज उसमें मालूम होना चाहिए। देन ओनली यू विल एबल टू इम्प्लीमेंट दैट, और यू विल एबल टू मेक अ डिसीजन आउट ऑफ दैट। जैसा कि कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दिया गया है, और कोई भी चैलेंज, कोडिंग चैलेंज, तो आप उसमें सबसे पहले चीज क्या देखते हैं कि आपका डेटा क्या है। आपने जैसे लीड कोड में भी देखा होगा, सैंपल इनपुट दिया होता है, ठीक है? तो ये हम्म। इनपुट पार्ट है, मतलब आपका कितना इनपुट है उसमें, 0 इनपुट है या कितने नंबर ऑफ इनपुट है, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा। फाइनाइटनेस, ठीक है। whether your algorithm will terminate or not after certain number of steps, क्योंकि अगर एल्गोरिथम टर्मिनेट नहीं होगा तो इट वोंट वर्क, राइट? अगर आप, जैसे कि आपको मालूम होगा, एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन और you already know. So like suppose if you pass 1 to the while loop, और अगर for loop को आप इस टाइप से यूज करके प्रिंट करोगे ना, तो it will print to print infinite times. It will take an infinite loop. Okay, so this infinite loop, it means that the problem will not be going to stop, right?
Yes. So that's the reason that before starting an algorithm or before writing the code, these are the few keywords we should be aware. Definiteness. Definiteness means each step of your code should be unambiguous and it should be lead to your final solution. Sometimes if you use too many functions in your code, अगर मैंने normal addition बोला है, even if I say you do the addition of two numbers, so you might be there are two steps, right? You are going to do simple main function. In that main function, you are going to take you are going to ask the user enter a and b, and you are going to do the a plus b, right? Okay. और अगर आपका दूसरा अप्रोच ये है कि आप एक फंक्शन लिखते हो, सोचते हो कि नहीं मैं फंक्शन के थ्रू करता हूँ, मैं सम फंक्शन लिखता हूँ, सम फंक्शन के थ्रू फिर उसमें दो पैरामीटर लूंगा और जो भी पैरामीटर यूजर एंटर करेगा उसके बेसिस में फर्दर ऑपरेशन करूंगा और वॉट एवर इट इज। ओके, तो यहाँ पर Hmm. कोड कौन सा एफिशिएंट है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सिंपल प्रॉब्लम तुम्हें दिया था कि यू हैव टू जस्ट ऐड इट, but one person Yes. will implement simply this one, another one is this one. So which is more efficient? This one, first one, right? Open. Hmm. क्योंकि वहां पर आपके नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड इज लेस, कॉम्प्लेक्सिटी लेस है, Yes. लाइन ऑफ कोड लेस है, right? So that's the reason it is more efficient. And if you take too many function, अगर जैसे कभी कभी क्या होता है कोडिंग में ना, with the use of recursion they will make confusing। यहाँ पे सम को फंक्शन डिफाइन करके कर्ली ब्रेस के अंदर दे विल गोइंग टू कॉल अनदर Hmm. फंक्शन व्हिच इज डूइंग अल्टीमेट योर करंट टास्क। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे सम को एक फंक्शन Hmm. बनाया, इसके अंदर मैं एक और ठीक सम है। को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और एक्चुअल जो मेरा फंक्शन है कॉलिंग फंक्शन वो ये है। तो मतलब वो एक लूपिंग टाइप ऑफ बना दिया रिकर्शन, मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन, मतलब कोड के अंदर फ्लो ऐसा आएगा, सम को ऐसा दिखेगा, तो अगेन जैसे कि अगर मैं ऐसा दे देता हूँ, ठीक है, ये विल ये जो है अनएम्बिगियस हो गया, मतलब इस फंक्शन के अंदर आया, इसको फिर कॉल कर रहा है, फिर ये अंदर जाएगा, फिर इसको फिर कॉल कर रहा है, तो ये अनएम्बिगियस Hmm. कोड जाता है, राइट? Yes. So that's the reason that your code should not be ambiguous. It should be clear. Steps are definite, means step are clear, and they are connected to each other. So that only means definiteness. Input output means what you're expected in, means what is your set of input, what is your expected output, and effectiveness means how your code is efficient in sum of doing operation, how fast is. So these are the five deciding factor for solving any problem, and you should be aware about it. लाइक कि मेरा इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, इनपुट की रेंज Hmm. क्या है, आउटपुट कैसा होगा। सो उसकी बेसिस पे आप वर्क कर सकते हो, राइट? अगर मैं सैंपल इनपुट आउटपुट दूंगा तो उस पे आप कोड लिख सकते हो। सो दिस आर कॉल एज द 5 steps that we should be aware about solving the any code or any algorithm। Okay. तो जो डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके ही हम इसमें यूज करेंगे, जैसे कि अभी एक ये एक सिनेरियो है, ये फ्लो चार्ट मैंने जो आपको एल्गोरिदम बोला था ना, वो इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सूडो कोड में ना हम लोग ऐसा लिखते हैं, जो ये मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। इज इट विजिबल क्लियरली? Yes. Yes. तो अभी जैसे इवन फाइंड रिमाइंडर, ये जो एक स्टेप है जो रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा, इज इट जीरो? यस। Hmm. इफ इट नो, देन अगेन विल स्टेप गो बैक एंड जीसीडी। मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन में हम लोग कैसे करते हैं, अगर मैं बोलूंगा कि आपको दो, मतलब
कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट तो कॉमन हाईएस्ट नंबर लेता डिवीजन। है वो। हाँ करेक्ट। सो यहाँ पर ये फ्लो चार्ट उसी के बेस में है। इट विल कीप ऑन गोइंग अनलेस आपका जो रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ओके। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है, मतलब उन दो नंबर में ऐसा कौन सा डिविजर होगा जो दोनों में कॉमन होगा और हाईएस्ट होगा, राइट। सो हम्म। ये फ्लो चार्ट हो, ये आपका फ्लो चार्ट एल्गोरिदम हो गया उसका। और जब आप सुडो कोड लिखते हो, मतलब सेम कह सकते हो, सुडो कोड में थोड़ा सा एरो वगैरह का यूज होता है। एल्गोरिदम में हम लोग सिर्फ ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब डिवाइड एम बाय एन, लेट आर बी द रिमाइंडर। सो ये एक एल्गोरिदम है आपका। सूडो कोड में एक्चुअली एरो वगैरह यूज होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे स्लाइड में तो नहीं अभी, लेकिन मैं आपको सूडो कोड का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। हाँ देखो, इस टाइप से होता है इनपुट। ये कोड नहीं है, ठीक है, ये देखो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं इजी वाला दिखाता हूँ। Earlier days we were using that, but now we are not using much. हाँ देखो, इस टाइप से होता है इनपुट आउटपुट प्रोसीजर, गेट एन, गेट एस वन। तो ये कुछ एरो का आप यूज करते हो इसमें। ये मेरे नंबर ऑफ, मतलब इनपुट को मैं एन को एक्सेप्ट करूंगा, फिर ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करूंगा। सेट काउंट इज इक्वल टू वन मीन्स, ये जो टर्म्स यूज हो रहे हैं ना, सेट मतलब काउंट का वैल्यू मुझे वन सेट करना है अभी। मतलब मैं इनिशियलाइज कर ठीक रहा है। हूँ वेरिएबल को, सी एच को हम्म। इनिशियलाइज कर रहा हूँ, आई को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। सो इस टाइप के टर्म्स यूज होते हैं, वो सूडो कोड होता है। और अगर एल्गोरिदम बोलूंगा तो एक नॉर्मल आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो, एक्सेप्ट एन, एक्सेप्ट एस वन एस टू एस एन, और काउंट इज इक्वल टू वन, और इनिशियलाइज काउंट इज इक्वल टू वन, इनिशियलाइज सी एच वेरिएबल टू एस वन। तो उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। और सिमिलरली जब आप प्रोग्रामिंग लिखोगे तो यहाँ पे फिर वैसे लिखोगे, स्कैनर एस सी, इनपुट स्कैनर, फिर वो एस सी डॉट, नेक्स्ट आई एन टी, नेक्स्ट इंट, जो भी है उस हिसाब से कोड लिखते हो। सिमिलरली स्कैन एफ सी लैंग्वेज में, अगर जो एक्सेप्ट करना है इनपुट को, राइट। सो उस हिसाब से होता है। हम्म।